Yes, let us discuss. See here, in case of the circular motion, we have seen the basic concepts like angular displacement, angular velocity, and angular acceleration, and the interrelationships between them. Okay. Now we'll see some techniques and tools to solve some MCQs. देखो अभी पे सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जहां तक सवाल है, सपोज देयर इज अ पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें कौन सी चीजें कांस्टेंट होती है और कौन सी चीजें बदलती है, चेंज होती है, तो वो हम एक बार लिस्ट आउट करेंगे फटाफट। तो देखो कांस्टेंट चीजें कौन सी है, समझ सकते हो ठीक से, और यहाँ पे वेरिएबल चीजें कौन सी है, तो वो हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। ठीक है। If the particle is moving along the circle with uniform speed or constant speed, that is in uniform circular motion, we want to say. Okay, uniform circular motion के अंदर कौन सी चीजें constant रहती है? What do you think? What about radius vector? Radius vector के बारे में क्या बोल सकते हो? Constant or variable? Just type C and V in the chat box. फटाफट हम जस्ट लाइक अ क्विज हम करेंगे, क्विज के जैसा ही हम खेलेंगे। तो जो तुमको लगता है कि वो कांस्टेंट है तो उसके लिए सिर्फ सी टाइप करो। ओके, और जो तुमको लगता है इट्स अ वेरिएबल तो सिंपली वी टाइप करो चैट बॉक्स में फटाफट। रेडियस वेक्टर, व्हाट डू यू वांट टू से? रेडियस वेक्टर आर बार, yes, it should be variable, right? So but we can say radius, only radius if we say, then it will be a constant, correct है? तो radius is a constant, तो radius को हम किधर डालेंगे? constant के लिस्ट में डालेंगे, जबकि radius vector को, ठीक है, radius vector को यहाँ पे, yes correct, अच्छा, radius vector will have constant magnitude but variable as its direction keeps changing, correct? तो जहां तक जब हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे, when we talk about the radius vector, then it will be a variable here. But if we only talk about the radius मतलब ही magnitude of radius vector, which will be a constant, and that's why it will be listed in the constants list. Remember. चलो ठीक है. Second question, okay? Angular displacement, theta. What do you say? Is it constant or variable? Yes, obviously variable. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बदलता जाएगा ना। यहाँ पे सपोज 1 सेकंड में अगर मान लो वो 30 डिग्री एंगल कवर करता है तो 2 सेकंड में 60 करेगा, 3 सेकंड में 90 करेगा, 4 सेकंड में 120 and 150, 180 and so on like that, right? So therefore angular displacement is no doubt it's going to be a variable. Okay, चलो ठीक है. Yes, what can we say about angular velocity? ओमेगा, ओमेगा के बारे में क्या बोल सकते हो? Yes, it's constant. Very good. So angular velocity will be a constant. तो ये constant के लिस्ट में आएगा, क्योंकि angular velocity मतलब rate of change of angular displacement, मतलब 1 सेकेंड में अगर वो 30 डिग्री एंगल कवर करता है तो हर सेकेंड में 30 ही करेगा ना, इसलिए the rate of change of angular displacement will remain the constant thing, and that's why angular velocity remains constant in magnitude as well as in direction. Okay, because direction, as we have seen last time, it is given by right hand rule, which is outwards into the plane of figure. तो ये पूरे प्लेन फिगर के प्लेन को ही वो परपेंडिकुलर होता है, तो या तो आउटवर्ड्स होगा या तो फिर इनवर्ड्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द पार्टिकल इज revolving in the anti-clockwise direction like this or clockwise direction like this. So that's why the direction of angular velocity will remain constant and magnitude will also be constant, no doubt. And what about angular acceleration here? What can we say? Angular acceleration, is it constant or variable? Angular acceleration, actually angular acceleration is 0.
In case of uniform circular motion, there is no angular acceleration at all. So zero क्या है, constant ही तो है ना, तो इसलिए वो भी constant के लिस्ट में आएगा. चलो ठीक है, angular acceleration is going to be a constant, no doubt. What about linear velocity? Linear velocity के बारे में क्या बोल सकते हैं? Velocity, is it constant or variable? Yes. Velocity is again a vector quantity, correct है? So it's directed along the tangent to the circular path at every point, and that's why we can see the direction keeps changing, and that's why we can say the linear velocity is going to be a variable. So it is going to be in this variables list, right? The variable के list में आ जाएगा वो linear velocity. Yes. चलो मुझे बताओ अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सी लिस्ट में आएगा? जल्दी चैट बॉक्स में डालो. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट? सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर उसका फॉर्मूला देखते हो तो पता चलता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी r ओमेगा स्क्वायर, और वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट इज आल्सो इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, और इट इज आल्सो गिवन बाय दिस v into omega. But don't forget that it is directed along the radius and towards the center at every point. So at this point here it will be like this. At this point it will be directed here in this way, and at every point it will be directed along the radius towards the center. So as soon as we see the direction, we can come to know that it is going to be a variable, not a constant, because its direction continuously changes. Correct है? So इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो उसको हम कहाँ पे लिस्ट करेंगे? जरूर वेरिएबल के लिस्ट में हमको लिस्ट आउट करना पड़ेगा. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नो डाउट. और बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट कैन वी से? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे आएगा? Again, it's going to be a variable because it is also directed along the radius and towards the center. Correct? Centripetal force is always directed along the radius towards the center, and that's why it will again be a variable only. No doubt. Acha, what can we say about momentum? Can you tell me? Momentum. Either it is constant or variable. कौन बताएगा? Again, see, momentum is defined as the product of mass and velocity. Here, mass is a scalar quantity, no doubt, but velocity v is nothing but a vector, right है? तो जो quantities vectors है, तो वो और वो जो tangential directed है, तो उनके बारे में हमको ये बोलना पड़ेगा कि they are variables. So it will be a variable here. So p bar is equal to mv bar हुआ करता है, बराबर? तो इसलिए v bar मतलब क्या? Velocity, and velocity is always along the tangent. So momentum will always be along the tangent at every point, and that's why momentum will also change its direction as the particle moves along the circle, and that's why the momentum is also going to be a variable only. Remember, so it will be a variable here. Variable कहाँ से आएगा? Centripetal force लिखना चाहिए था ना हमको. Yes, so it will be centripetal force. And also the momentum. Momentum is also the variable here. It changes in direction only, remains constant in magnitude, no doubt. Yes. What can we say about the kinetic energy? Kinetic energy. Yes, speed up. काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल. वेरी गुड. अभी काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल कैसे हुआ मुझे बताओ. देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है
k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, बराबर है। अभी इसमें v मतलब क्या है, वेलोसिटी है, बट तुमको ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर एक्चुअली। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर। काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन थोड़ी होता है, काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी होता है, एनर्जी को कोई डायरेक्शन होता नहीं है। whatever work is done on the body in order to push it gets stored in it in the form of kinetic energy. So kinetic energy doesn't have any direction, it is a scalar quantity actually. And ये फॉर्मूला में भी देखो, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी तुमको जो है वेक्टर दिख रहा है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इट विल बी हाफ इंटू एम इंटू वी बार स्क्वायर, बट इट विल बी इन फैक्ट वी बार डॉट वी बार एक्चुअली। तो वी बार डॉट वी बार अगर करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का हमको पता है कि रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ नंबर, एंड दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी अ स्केलर। तो वो उसमें वेक्टर है ही नहीं। और यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलरेडी कांस्टेंट, सो स्क्वायर ऑफ दैट मैग्नीट्यूड विल आल्सो बी अ कांस्टेंट, and m is also constant and half is also constant, so this whole thing is going to be a constant, so kinetic energy is going to be a constant. Okay, so kinetic energy has to be listed here in the constants list. Why? Because it is a scalar quantity and it depends on the speed, remember. तो देखो ठीक से, तो ये बन गया हमारा kinetic energy, and speed obviously it is going to be in the constants list, no doubt. Okay, so all these are the fundamental concepts you have to understand here, that कौन कौन कांस्टेंट रहता है और कौन कौन वेरिएबल होता है। अभी देखो वेरिएबल में कौन कौन आ गया, देखो ठीक से, एक तो रेडियस, दूसरा मतलब रेडियस वेक्टर, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीसरा लीनियर वेलोसिटी, चौथा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, फिर सेंटीमीटर फोर्स एंड देन मोमेंटम। इतने सारे क्वांटिटीज जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अभी अगर तुमको पूछा कि फाइंड आउट द चेंज इन सपोज रेडियस वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट टर्न्स थ्रू सपोज एंगल थीटा, तो कैसे करेंगे। सपोज ये सर्कल है और इस सर्कल में सपोज पार्टिकल स्टार्ट करता है इस पॉइंट पे, मान लो इस ए पॉइंट पे पार्टिकल स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड थीटा इतना एंगल कवर करके वो यहाँ पे आ जाता है, बी पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। सो उसका जो रेडियस वेक्टर है तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे r1 बार, ओके, और यहाँ पे जो उसका रेडियस वेक्टर बनता है उसको बोलेंगे r2 बार, चलेगा। तो अभी यहाँ पे इसमें एंगल थीटा है सपोज, सो हाउ विल यू गेट द चेंज इन दिस रेडियस वेक्टर। Do you know any formula, ready-made formula for finding the magnitude of change in radius vector? Yes, magnitude of change in radius vector. How will you get that? Basically, सबसे पहले मुझे ये बताओ, has radius vector been changed? Yes, definitely, because radius vector is a has a direction as well as magnitude. भले magnitude constant है, but radius vector change तो हुआ है। So अगर तुमको पूछा by what amount, तो क्या करेंगे? How will you answer this? By what amount? How much it has been changed? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जो ए से लेके बी तक जाएगा। ये देखो ये ए बी वेक्टर उसको हमने ड्रॉ किया, मींस इट विल बी अ कॉर्ड, एक्चुअली इट इज अ कॉर्ड ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। तो अभी इसमें इस ट्रायंगल के अंदर हम बोल सकते हैं यहाँ पे यूजिंग द ट्रायंगल लॉ वी कैन से r1 बार प्लस ab बार इज व्हाट, इट इज गोइंग टू बी r2 बार, करेक्ट है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर gives us this vector, यही तो है ना ट्रायंगल लॉ, yes. So if we use it here then we get this r1 bar plus ab bar equal to r2 bar, which means ab bar has to be the difference of r2 bar minus r1 bar, which means that this ab bar itself is going to be the change in vector। ये समझा क्या ठीक से, this ab bar itself is nothing but the change in radius vector, okay। But how will you get the direction, how will you get the magnitude of this change in vector? ab bar का magnitude कैसे हमको मिलेगा, तो उसके लिए कोई भी दो वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
जो हमने ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के अंदर डेवलप किया है, सो दैट इज टू बी यूज्ड हियर. सो ए बी बार को ही हम क्या लिख सकते हैं? सो दिस ए बी बार कैन बी एक्चुअली रिटन एज मॉड ऑफ डेल्टा आर बार. करेक्ट है? डेल्टा आर बार उसको हम लिख सकते हैं. डेल्टा मतलब डिफरेंस, ओके, एंड आर बार मतलब रेडियस वेक्टर. सो डिफरेंस इन रेडियस वेक्टर, उसको ही हम बोलेंगे डेल्टा आर बार. सो दिस डेल्टा आर बार can be found out by using the special formula which is nothing but simply root of, जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी, रूट ऑफ, अभी एक्चुअली दो वेक्टर्स का सम निकालने के लिए, मतलब एडिशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आर बार, आर का मैग्नीट्यूड जो है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. करेक्ट है? और उन्हीं दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला होता है जो हमने ऑलरेडी देखा था, जो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर plus minus 2pq into cos theta. See the difference. Here it is a minus sign and here it is going to be the plus sign, right? That is the basic difference between these two formula. That is, this is for the difference and this is for the addition or resultant or sum we can say. So अभी यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बताओ? ये सेकेंड वाला करना पड़ेगा. तो जबकि डेल्टा आर बार is going to be the difference of this r2 bar and r1 bar, we will have to use this p bar as r1 bar and q bar as r2 bar, so that we can get this as r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2 into cos of theta, where theta is going to be the angle between this r1 bar and r2 bar. See it here. Yes, so now if we just simplify this further, but remember one thing here, that mod of r1 bar, if you see, and if you see this mod of r2 bar, then mod of r1 bar and mod of r2 bar are going to be the same, which we are calling it as a r1 and r2 actually. Okay, mod of r1 bar can be written as simply r1 and mod of r2 bar can be written as r2. And if r1 and r2 are same only, then no need to call them as r1 and r2 separately, we can call them as r commonly. करेक्ट है? अगर r1 और r2 सेम ही है तो फिर r1 r2 बोलने की जरूरत ही क्या है? तो उसको हम सिंपली r बोल सकते हैं. जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है तो उसको हम r बोल सकते हैं, r1 का हो या r2 का हो, मैग्नीट्यूड को हम r बोल सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि आखिर वो रेडियस ही तो है. बट हाँ, जब तक वेक्टर का सवाल है तो वेक्टर्स के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते r1 बार इज इक्वल टू r2 बार. This statement is wrong. Okay, this is not true actually. R1 bar is not equal to R2 bar, but R1 is actually equal to R2, and we can call it as R commonly. Okay, so if we just replace this R1 as well as R2 by R, then we can get this delta R, mod of delta R bar to be simply equal to root of. तो देखो यहाँ पे, तो वो बनेगा R1 R square plus again R square and minus 2 r1 into r2, मतलब ये r into r, मतलब r square फिर से, and into cos theta as it is, so that we can get this delta r bar mod is going to be actually r square plus r square is going to be 2r square. Correct है? Minus here it is again 2r square into cos theta, so that if we take this 2r square common, then we can get this mod of delta r bar to be simply equal to root of 2r square common, and we are left with 1 minus cos theta inside the bracket, so that mod of delta r bar will actually be equal to root of 2r square into 1 minus cos theta. How can we simplify this? We know that in the trigonometry there is a formula 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. Okay, remember this formula. So if we use it here, then we can get this delta r bar, mod of delta r bar to be simply equal to 2 into 2 becomes 4, right? And r square as it is into sin square theta by 2 is again kept as it is, and hence we can get this as sin square theta by 2. And then if we take the square root on both sides here, मतलब square root of this RHS here, then we can get that this 4 का square root बनता है 2 और r का square root बनता है r. Then here it is sin theta by 2 का square root बनता है simply sin square theta by 2 का square root बनता है sin theta by 2 only. So this is actually going to be the final formula for the change in the radius vector. This is actually the special case
which we have already studied in the case of subtraction of vectors. If you remember, subtraction के लिए मैंने आपको एक टेबल भी बना के दिया था. तो उस टेबल के अंदर जितने भी सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज थे, तो उसमें से जो आंसर्स हमको मिलेंगे वही हमको यहाँ पे भी मिल सकते हैं आराम से, नो डाउट. तो ये बात याद रखो ठीक से कि डेल्टा आर बार मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन रेडियस वेक्टर कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एज रेडीमेड. ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं तुमको पूछता हूँ, जस्ट आंसर करो फटाफट चैट बॉक्स में. Suppose a particle moves along the circle and it starts from point A and point B, ends up to the point B. Okay, and suppose the angle between these two AB is suppose 60 degree. Okay, 60 degree. What is the change in magnitude of radius vector? Can you tell me? Mod of delta r bar कितना आएगा? देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास. Mod of delta r bar is actually equal to 2r into sine theta by 2. Just use this formula here to find out the mod of delta r bar in this case. Yes, it will be 2r into sine 60 by 2, correct hai? And what is this 60 by 2? It is going to be 30, and hence we get 2r sine 30, which is going to be 2r into half. We know that sine 30 is half, so 2 gets cancelled and we are left with simply r. So can you believe that this change in magnitude of change in radius vector when the particle goes from A point to B point here is same as r? Because if we just draw the chord here, then that chord will be the of the same length as that of this radius of this circle. तो ये अगर दोनों अगर r r है तो ये भी r होगा. क्यों? क्योंकि ये एंगल 60 है. ये एंगल 60 होने से और ये r और r सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों एंगल्स भी सेम बन जाते हैं, क्योंकि वो इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है. और जबकि ये दोनों एंगल सेम है और ये अकेला 60 है, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं तो x plus 60 gives us 180. And since 2x plus 60 is equal to 180, it means 2x must be equal to 120, and hence x must be equal to 60 each. That means these two angles are also going to be 60 degree, which proves that it's a equilateral triangle. And equilateral triangle के अंदर क्या होता है, तीनों साइड सेम होते हैं. तो ये दोनों साइड्स तो ऑलरेडी सेम है, they are equal to r here. So this third side will also be r. This proves that our result is correct. Okay, now tell me another answer. Suppose that the particle moves from the point A to the point B and covers an angle 90 degree here. Okay, then what will be the change in vector, change in radius vector? Can you tell me? Mod of delta r bar, how much it will be? Yes, we can find out it in two ways, either using this formula ready made, that is 2r sine theta by 2. Yes, very good, root 2r, correct Prashant. So here it will be, yes Kashish also. So here it will be sine of theta by 2. Theta matlab 90. So 90 by 2 here comes out to be 45. And 2r into sine 45 comes out to be 2r into 1 by root 2. And as we know that root 2 can be written as root 2 into root 2. And 1 root 2 will get cancelled and we'll be left with root 2r. And even we can also find it out diagrammatically. If we just join this a and b and find the chord, then that chord will have a length which is root 2 times of the radius of this circle here, which is a property of a square. If you remember, square का जो diagonal होता है, अगर square का side अगर a है, हर एक side अगर a है, तो square का diagonal हमेशा उसके side के root 2 times के बराबर हुआ करता है. ये बात याद रखो ठीक से, ठीक है? So ये बात अगर use करेंगे, तभी भी हमको वही मिलेगा, because this triangle here will be a part of a square. Okay, and that's why its diagonal will be root 2 times of the radius of circle like this. Okay, tell me another one. अभी तीसरा question अभी answer करो. Suppose there is a particle which is moving along the circle, and suppose the particle turns through a 120 degree angle. Okay, this is the point A and this is the point B, and suppose the particle turns through 120 degree angle.
Then what will be the magnitude of change in radius vector? Can you tell me? Yes, root 3r. Very good. Prashant has learned the table, so he can give the answers immediately. All of you are requested to learn that table. तो जो मैंने मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर सब्ट्रैक्शन के लिए बना के दिया था, वो टेबल सभी लर्न करो, so that we can answer this also quickly. So delta r bar will actually be equal to 2r sine 120 by 2, so that it becomes 2r sine 60, and sine 60 we know that it is root 3 by 2, so we can just replace it here and get it as 2 to cancel, and we are left with root 3r as a final. Correct hai? So in this way we can get the final value. But here the surprising thing is that this formula is applicable not only to find out the change in radius vector here, but the same formula is valid to find out the change in velocity also. See here, if suppose the particle in uniform circular motion has a velocity v1 bar here in the point A, at the point A suppose, and suppose it turns through an angle theta, and at that point, at point B suppose, it has a velocity which is going to be v2 bar. Okay, तो यहाँ पे उसका जो velocity है वो v2 bar है. Yes, तो यहाँ पे उसका velocity v1 bar था, यहाँ पे उसका velocity v2 bar बन गया. No doubt. Here we can say that the velocity has been changed. No doubt. But by what amount? If you want to find out the magnitude of change in velocity here, okay, अगर हमको change in velocity का magnitude अगर निकालना है, तो उसके लिए हमको फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है. We can call it as delta mod of delta v bar, which will actually be equal to 2v sine theta by 2, and this can be proved in the same way as we have proved it for the radius vector. Okay, so if suppose the velocity of the particle is something like v, which is constant here, तो यहाँ पे v is going to be the constant velocity, which is the magnitude of v1 bar as well as v2 bar. तो mod of v1 bar and v2 bar को हम ही commonly यहाँ पे v बोल रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे हालत में अगर तुमको बोला कि if the particle suppose turns through an angle of suppose 120 degree, 120 degree से अगर ये एंगल टर्न होता है कोई पार्टिकल, तो what is the magnitude of change in velocity vector here? How will you get the magnitude of change in velocity? Just it will be root 3v. That's it. Root 3v. That's it. देखो उसका velocity कितना है? Constant velocity v है. तो इसलिए उसका जो magnitude of change in velocity when it turns through 120 degree angle will be root 3v simply. And if suppose it turns through 90 degree angle, okay, suppose यहाँ पे उसका velocity इस तरफ है और यहाँ पे जाने के बाद उसका velocity इस तरफ बन जाता है, तो उनके बीच में 90 degree angle है. तो if suppose the particle turns through 90 degree angle, then what will be the magnitude of change in velocity here? So the magnitude of change in velocity will be simply root 2 times of v, not r in this case. It will be root 2 times of v. Simply, it's that simple. And if suppose by chance the particle turns through 60 degree angle, then we can say that the mod of magnitude of change in velocity will be simply same as v. Very good, correct. Right. Yes. Even उससे भी आगे जाके हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि the same formula will be applied in order to find out the change in momentum vector also. तो देखो यहाँ पे if suppose the particle has a momentum p1 at the point A here, and suppose it turns through an angle theta and attains a momentum p2 at this point B here. Okay, so p2 bar and p1 bar also. So actually p1 bar and p2 bar are going to be same in magnitude, but they are just different in directions. That's why their magnitude will be commonly called as p. And suppose that the particle moves from this point A to B covering an angle theta, then what will be the magnitude of change in momentum vector in this case? So it will be 2p sine theta by 2. Again the same formula. See here. And suppose if theta is 120, then delta p will be equal to simply root 3p, correct?
And if it is 60 degree, then mod of delta p will be simply p. And if it is 90, then mod of delta p will be simply root 2 times of p. Yes. And if it is 180, then what will be the magnitude of delta p bar here? What is the magnitude of change in momentum vector if the particles turns through 180 degree? Very good. 2p. Correct. So it will be 2p. So magnitude of change in magnitude momentum vector will be twice the original momentum of the particle. Even इससे भी आगे जाके we can also apply the same formula for centripetal force or centripetal acceleration here. देखो suppose एक particle जो है वो उसका acceleration, centripetal acceleration here at this point, when it is at a point A here, it is going to be suppose A1 bar. Okay. And suppose it moves to the point B covering angle theta. Suppose it moves to the point B here, and at that point its centripetal acceleration is going to be A2 bar. Yes. Okay. Then in that case, what can we say? Abhi, no doubt, magnitude of centripetal acceleration is going to be the constant at every point, which we can call it as simply A bar. Okay, उसको हम simply AC भी बोल सकते हैं, AC बोल सकते हैं, AC मतलब magnitude of centripetal acceleration at any point in general. But since its direction is different, we have to call it as A1 bar and A2 bar at 2 different points, right? But if suppose the particles turns through this angle theta, then what is the magnitude of change in centripetal acceleration vector here? Mod of delta AC bar क्या होगा? It will be actually 2 times of AC into sine theta by 2, and all results will be obtained in the similar way as we obtained already for this radius vector, velocity and momentum here. And even we can same thing can be talked about for the centripetal force also. So centripetal force, suppose the particle is revolving along the circle, and suppose it is at point A, and at that time the centripetal force is expressed as F1 bar. Okay. And suppose that the particle moves to the point B here covering angle theta, and its centripetal force acting at that point will be equal to F2 bar in that case. After all, this F1 bar and F2 bar are just different in directions. So far as magnitude is concerned, this F1 bar and F2 bar can be commonly called it as FC, which is nothing but simply the magnitude of centripetal force at every point. So in that case, if suppose the particle turns from through angle theta and goes from point A to the point B here, then in that case, what is the magnitude of change in centripetal force? What is the formula for magnitude of change in centripetal force? We can call it as delta FC bar. Mod of delta FC bar will actually be equal to 2 times of FC into sine theta by 2. And all the results will be equally obtained in the same way as we have obtained it as for centripetal acceleration and or for radius vector or for the velocity vector and momentum vector, no doubt. तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है. सो जो क्वांटिटीज सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होते हैं, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहते हैं, उन सभी क्वांटिटीज के बारे में हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि the magnitude of the change in them, those vector quantities will be obtained by just 2 times of the magnitude of that quantity multiplied by sine of the half of the angle through which the particle gets turned. Okay, that will be the magnitude of that quantity. If we could keep it star here, then it will be delta star here. So delta star matlab magnitude of the change in that vector quantity will be simply equal to 2 times of magnitude of that quantity multiplied by sine of half angle through which the particle gets turned. Okay. Yes. See here, what about the angles more than 180 degree? अगर angles 180 degree से भी ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? Confuse हो जाएंगे. देखो, if suppose we have this R bar, this is R1 bar, which is the radius vector at point A here. Okay, and suppose that particle turns through an angle
मान लो 240 डिग्री. ओके, नाउ दिस 240 डिग्री इज सर्टेनली ग्रेटर देन 180 डिग्री, करेक्ट? एंड इन दैट केस द पार्टिकल विल बी एट दिस पॉइंट हियर, राइट? पी पॉइंट यहाँ पे उसको बोलेंगे. तो ऐसे हालत में इन दोनों के बीच में का जो रेडियस वेक्टर के बीच में का जो चेंज है वो कैसे हम निकालेंगे? हाउ विल यू गेट दिस डेल्टा आर बार, मॉड ऑफ डेल्टा आर बार? तो अभी इस केस में क्या करना कि एंगल जो है वो इधर से अगर मेजर करेंगे तो वो 240 मिल रहा है, नो डाउट. लेकिन अगर ये एंगल इधर से मेजर करो शॉर्टकट से तो क्या मिलेगा तुमको? 120 मिलेगा कि नहीं? 120. सो यूज द रिजल्ट फॉर 120. दैट्स इट. अभी आखिर सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर तुम 180 से ऊपर जाएंगे तो उसको तुमको 360 से माइनस करके तुमको वो वापस 180 से छोटा बन जाएगा एंगल, करेक्ट है? तो उल्टा उल्टा एंगल हमको कंसिडर करना है. समझा ठीक से? So accordingly we can use the result for 120, and in that case what is the change in magnitude of change in radius vector in this case here? Same as it happens for 120. क्योंकि देखो सीधी बात है कि सर्कल है, ये सर्कल के अंदर अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, नहीं समझा नहीं? देन इट विल बी 60 का मतलब क्या? हाँ, correct, theta by 2, correct. So the result will be actually 2 times of r into sine of theta by 2. And if we put this theta as 120 degree here, then we can get simply it as 2r sine 60 degree, which is going to be 2r root 3 by 2, which is going to be root 3 times of r, which is the standard result for 120 actually. So the same result can be used here because angle is 120, which is just 360 minus 240. तो जब भी एंगल 180 से ऊपर होगा तो उस केस में हमको उसको 360 में से माइनस कर देना है, क्योंकि उसका रीजन भी बताता हूँ कि अगर 120 डिग्री एंगल से टर्न होने के बाद अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है, ये तो ये देखो ये 120 डिग्री एंगल है, नो डाउट. अभी 240 डिग्री एंगल से अगर यहाँ पे पहुंचता है, देखो ठीक से ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया 240 की वजह से, तो अभी 120 डिग्री से जहां पे पहुंचेगा इस पॉइंट को अगर हम बी बोल देंगे और इस पॉइंट को अगर सी बोल देंगे, तो ए को अगर बी के साथ ज्वाइन करो या ए को सी के साथ ज्वाइन करो, दोनों तरफ से हमको सेम ही मैग्नीट्यूड मिलने वाला है कि नहीं? तो ए बी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू सेम ही रहने वाला है. तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन रेडियस वेक्टर विल बी सेम whether the particle turns through 120 degree or it turns through 240 degree, means 120 degree from back side, right? तो ये 240 डिग्री से टर्न होना मतलब ही क्या? 120 डिग्री से बैक साइड से टर्न होना मतलब माइनस 120 डिग्री से टर्न होना. आखिर 120 हो या माइनस 120 हो, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम, नो डाउट. एंड ये हमको अच्छी तरह समझना है. चलो ठीक है. So this is one point just we have to remember. The second thing here is to remember here is in case of the uniform circular motion, the relationship between V and R is actually V equal to R omega. Yes, V is equal to R into omega. See here, if R remains constant, okay, R is constant. In that case, we can say that V is proportional to omega. Check. Can you give an example of the same? If suppose R remains constant, then in that case, V will be proportional to omega. What does it mean? Is if suppose we have a particle, okay, and if suppose it is fixed tied to a string of length r, okay, and this is suppose the center and this particle is revolved, okay. So अगर हमने इसका लीनियर वेलोसिटी अगर बढ़ाया तो सीधी बात है एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगा, बिल्कुल. अगर हमने इसका लीनियर वेलोसिटी कम किया तो सीधी बात है एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगा, नो डाउट. तो जिस पार्टिकल का मतलब अगर उसका रेडियस अगर कांस्टेंट है, तो जब तक रेडियस कांस्टेंट है, सो इफ द पार्टिकल हैज द मोर एंगुलर वेलोसिटी, सपोज दो एग्जांपल्स हम ले लेंगे. समझो ये एक है फर्स्ट एग्जांपल और ये सेकंड एग्जांपल. इन दोनों पार्टिकल्स का रेडियस सेम है, याद रखो, रेडियस इज गोइंग टू बी द सेम.
but suppose this first particle turns through an angle 30 डिग्री पर यूनिट टाइम, तो 30 डिग्री पर सेकेंड वो टर्न होता है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, π/6 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट है, नो डाउट। और अभी ये जो पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल अगर सपोज ज्यादा टर्न करता है, ये सपोज मान लो 60 डिग्री से टर्न होता है पर सेकेंड ना, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, वी कैन से इट विल बी π/3 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट है, यस। तो अभी सीधी बात ये है कि जिस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसका लीनियर वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि इस पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा सेम टाइम में, जबकि यहाँ पे इस पार्टिकल को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सेम टाइम में, एक सेकंड में। तो इसलिए जो जिसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा उसका लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा, मींस v इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा व्हेन r इज कांस्टेंट, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, again we have that v is equal to r omega, but in this case if suppose omega is constant, okay, omega is constant, yes, in that case we can say v will be proportional to r, okay, so v will be proportional to r when omega is going to be a constant। उसका एग्जांपल बता सकते हो कोई, कौन बताएगा, v proportional to r when omega is constant। See here, if suppose we have a blade of a fan, फैन का जो ब्लेड होता है कि नहीं, सपोज इसके ये 3 ब्लेड्स है इस तरह से, yes, now see if suppose the fan rotates through, अभी 3 ब्लेड्स है बराबर, तो 3 ब्लेड्स होने की वजह से इन तीनों के बीच में एंगल कितना होगा बता सकते हो, all 3 blades of the fan are always equally inclined with each other, right, इतना तो समझ सकते हो आराम से। so what will be the angle between any 2 blades, 120 degree, Prashant, how will it will be 60, see here that this angle plus this angle has to be 360, correct है, so each angle will be actually 360 divided by 3 which is going to be 120, correct। चलो ठीक है, तो अभी अगर 120 डिग्री हर के बीच में है, so suppose that this particle, this fan turns through 120 degree angle per second and its angular velocity of this fan is going to be suppose 2π/3 रेडियन पर सेकेंड, 2π/3 मतलब ही 120 डिग्री पर सेकेंड, ओके, ये उसका एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड, what will happen is this fan will just turn through 120 degree angle, right? So if you focus on 2 particles of the fan, one is this A here and another one is B here, okay, तो इन 2 particles के बारे में अगर हम बात करेंगे तो होगा क्या ना कि the particle A will have to cover this much distance only while coming from this position to this position here, and the particle B will have to cover a distance which is equal to, see here, which is going to be greater than this one here। तो इसका मतलब यहाँ पे सपोज ये A डैश है और ये B डैश है, तो A को A से A डैश तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, सपोज 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और समझो ये B जो है वो इससे डबल डिस्टेंस पे है, तो इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जरूर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो दोनों को सेम लगा है ना, एक ही सेकंड में हुआ है ये पूरा सब, तो एक सेकंड में ये जो है 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। जबकि ये वाला जो पार्टिकल है दूसरा बी वाला पार्टिकल, तो वो उसी एक सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसलिए फिर उसका वेलोसिटी कितना हो गया, वी कैन कॉल इट एज 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। एंड हेंस वी कैन सी दैट द वेलोसिटी विल बी मोर फॉर द पार्टिकल व्हिच इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि देखो इसका जो रेडियस है वो r1 है सपोज मान लो, और इसका जो रेडियस है वो सपोज r2 है ये, तो इसलिए जबकि रेडियस ज्यादा है, जिसका रेडियस ज्यादा है उसका लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, उसको हम v2 बोल सकते हैं,
और जिसका रेडियस कम है तो उसका लीनियर वेलोसिटी भी कम होगा, v1 उसको बोल सकते हैं. So here in this case we can see that v1 is going to be equal to r1 omega, where omega is going to be the common angular velocity with which the fan rotates fully, and the second particle we can say that is v2 is actually going to be r2 into omega. Here omega is going to be the same. So if r1 is greater than r1 is less than r2, then v1 will be less than v2. That means if r1 increases, then linear velocity also increases, and that's why we can say that this v is directly proportional to r when omega is constant. This is the best example of that. Okay, this third thing is that, see, no doubt we have this v equal to r omega. So if v is remains constant, अगर v constant है तो उस केस में क्या होगा, r into omega, product of this r and omega will be a constant, which means that omega will be inversely proportional to the radius. करेक्ट है? तो रेडियस के साथ ओमेगा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, जिसका एग्जांपल ये है कि अगर मान लो हमने एक बड़ा व्हील और एक छोटा व्हील अगर टच करके रखा है, just touching each other externally, okay? In that case, if suppose this bigger wheel is rotating and because of that this smaller wheel is also rotating and there is no friction or sliding between the two, okay? ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और इस तरह से जैसे गियर होते हैं ना दो, समझो इस तरह से एक ये गियर है और उसके अंदर फंसा हुआ दूसरा एक गियर है, इस तरह से देखा वो तुमने? तो अगर ये दोनों घूम रहे हैं इस तरह से, ये इस तरफ घूम रहा है और ये इस तरफ घूम रहा है, we can see clearly that both of them will have the same linear velocity. These particles will have same linear velocities, right? So since linear velocity is constant here, v is going to be constant here. So in that case what we can say is जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी छोटा होगा, और जिसका रेडियस छोटा होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा. देखो कैसे, क्योंकि देखो इसका रेडियस छोटा है बराबर, तो ये जल्दी जल्दी घूमेगा, ठीक है, लेकिन ये इसका रेडियस जो है वो थोड़ा ज्यादा है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे घूमेगा. जब ये एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो इसके 10 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे. अगर रेडियस का रेशियो 1:10 है या 10:1 है, तो इसका रेडियस अगर मान लो 10 मीटर है और इसका रेडियस सपोज 1 मीटर है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा ना, तब ये 10 बार घूम जाएगा. ये होता है, एंड दैट इज बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, and in that case we know that is angular velocity is inversely proportional to the radius here. Okay, so these three are the important parts of this equation, v equal to r omega. Even we can draw the graph. If we draw the graph between v and omega, it will be a straight line passing through origin, and it will have a slope that is equal to r, which is the constant here. Okay, here in this case if we draw the graph between v and r, then it will again be a straight line, but it will have the slope which is going to be equal to constant, that is omega here. Okay, omega will be the slope. Remember, हमेशा जो constant of proportionality होता है इन दोनों के बीच में का, वो हमेशा slope बनता है, ठीक है, याद रखो ठीक से. एंड स्लोप का एक फॉर्मूला तुमको ये भी पता होना जरूरी है. स्लोप इज गोइंग टू बी एक्चुअली tan theta. If suppose this theta is given, the angle made by this line with the x-axis is also given, then we can just find out the tangent of that inclination and get the slope of that line, and that slope is nothing but the constant of proportionality between v and r here. Okay, and if we draw the graph between omega and r at constant v, then it will be a hyperbola, no doubt, like this. One increases, other decreases. So this is omega and this is r. So the graph between these two will be a hyperbola in this way. Okay, so this is another topic we have to discuss about. Yes. And also at okay, so centripetal force, centripetal acceleration is given by the formula v square upon r. Remember, and it's another formula is simply
AC is equal to R omega square. But don't forget here that we have the expressions for velocity and omega in terms of frequency and period. Okay. Omega can be written to be equal to 2 pi by t, and also it will be equal to 2 pi into n, and V can actually be written to be equal to 2 pi r upon t, and it will also be equal to 2 pi r into n. So if we use this formula here, then we can get the expressions for centripetal for acceleration as, तो v square के बदले क्या आएगा 2 pi r upon t का whole square into upon r. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 pi square into r square upon r into t square, where r gets cancelled once and we are left with 4 pi square r upon t square. Okay, so डरने का नहीं है, ऐसा अगर फॉर्मूला तुमको मिला तो even if we put this omega as 2 pi n, then we can also get it as r into 2 pi n का whole square, जिससे हमको मिलेगा r into 4 pi square n square. So this is also another formula for centripetal acceleration. It depends what is given here. Okay, so that is the basic concepts we have to study in today's lecture. Okay, so let us stop. Sorry for the late actually.